जिंदगी ये बोलेंगे कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए। हाय हाय हेलो कैसे हैं आप सब? we're here back with Aam Khayal Yes, Khayal is back, guys. and we're here to talk Bollywood. Our favorite topic for life. So Yes. सबसे पहला तो मारिया कैसी हैं आप? आप बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने मुझसे। देखें, हम अच्छे हैं, सेमेस्टर जा रहा है, बस हम भी सरवाइव कर रहे हैं सेमेस्टर के साथ। तो आपके ब्रह्मास्त्र कल रिलीज हो रही है, आपके क्या तासुरात हैं? ये आपने डायरेक्ट ही आप तो टॉपिक में बिल्कुल चले direct। गए ना, आपने टाइम जाया नहीं किया। लाइक इट। यस सर, आई एम वेरी एक्साइटेड। ऑल्दो यहाँ कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रही, यहाँ हमें जरा भी देखने को नहीं मिल रही, हम तरस रहे हैं, लेकिन फिर भी आई एम वेरी एक्साइटेड। स्क्रीनिंग करेंगे यूनी में। अच्छा, ऑल्सो द फर्स्ट थिंग दैट आई डू मतलब आफ्टर द मूवी रिलीजेस इज वॉच अनुपमा चोपड़ा's review on film Of course। companion. अच्छा, after watching it? No, After once it's once released। it's released, Yeah, I yeah। think उसका रिव्यू आ जाता है। Yeah, and जिस दिन रिलीज होती है उसी दिन आता है। and you know critics के लिए तो स्पेशल वैसे भी ये लोग हाँ, करते ही हैं, करते तो ही हैं। it's like she gets her Yeah, stuff yeah, done and ready to go. Anyways, the reason why we're talking about Brahmastra is because Brahmastra is supposed to save the Bollywood industry. Apparently, I hope it does, because we have seen the industry going downhill. But why is it in danger, Maria? Tell the audience. Why is it in danger? Yeah। I think, okay, unpopular opinion, लेकिन I think कि with the advancements of the OTT platforms, बहुत फर्क पड़ा है। Because ये unpopular नहीं, बहुत popular opinion है। क्योंकि अब जो है डिस्क्रिमिनेशन होना शुरू हो गई है, and I'm using the word discrimination because वही मतलब जैसे कुछ मूवीज होती हैं, ठीक है, they're not released theaters में, सही। they're released OTT platforms सही। में। क्यों? क्योंकि उनका बजट कम, मिड बजट लो बजट फिल्म्स हैं, या फिर स्टार कास्ट नहीं है, ए लिस्ट स्टार्स नहीं है उसमें, तो वो थिएट्रिकल नहीं मिलती। थिएट्रिकल नहीं मिलती। तो दैट आई थिंक इज वेरी डिस्क्रिमिनेटरी। राइट। ठीक है, everybody is on their journey. I mean, stars like Shefali Shah, they are getting the recognition that they deserved way back. उनको अब मिल रही है। Vijay Verma, but because of OTT, they worked in OTT first and then they got the theatrical films, didn't they? So imagine if Darlings was released theaters में. That's interesting. I mean, I think Darlings was a pure theatrical release. Why? I think it was a very OTT release because of how, you know, crazy the concept was. It's a very OTT sort of space. OTT, by the way, means streaming platforms, Amazon Prime, Disney Hotstar, Netflix, and all of those platforms. तो अच्छा, आप मुझे बताएं कि how do you feel that oh this is an OTT film and this is not? So you know, पहले तो हमारे पास OTT का इतना concept नहीं था, तो a lot of the mid budget, low budget films would get released in theaters and they would do well, okay, not so bad. But अब I feel like बहुत ही clear distinction है about what is an OTT film and what isn't, and I think the OTT is like basically not so big. It's like contained heartland sort of stories, I feel, especially now heartland की सारी stories I think directly OTT पे आती है, and just like by the virtue of the concept of how many like genres it was going into, Darlings in particular, I feel that maybe OTT was the right place. And also it gets a global audience instantly, right? Like, that is a very big that's a very big thing. I mean, people like us living in Pakistan, I mean, हम तो फिर भी कुछ करके कर लेते हैं, मगर अगर आप कोई गोरे हो जो कैलिफोर्निया में बैठे हो और आपको रिकमेंडेशन में डार्लिंग्स आती है and you're like, oh, what's this? True. Yeah. Because obviously वो एक एडवांटेज होता है कि वो रैंकिंग्स आ जाती हैं। Yeah. Yes. Yeah, I mean, I agree, but then I think वो थिएटर में जाके मूवी देखने का जो चार्म था वो थोड़ा सा कम हो गया है। Because अब there is this perception कि ओ अगर आप बिल्कुल ही massive budget film है तो उसको आप थिएटर के लिए रखो। तो I mean, I really want
stars like Pankaj Tripathi, Yeah. Nawazuddin Siddiqui, inki movies to be a theatrical release and then Right. see how the public reacts. Right. Because Yeah. I've read reviews unki movies ke कि how people love their उनकी films. lead films. हाँ, उनकी lead films. But then I want to see अगर वो theater में लगती हैं, then what is the What will reaction? happen? Yeah, that is interesting, and obviously a lot of this audience is looking for content, and if the content is good enough and the theatrical experience is great, you would go. Yeah, of course. Speaking of theatrical experiences, we had a bit of a debate about Bhool Bhulaiya 2. Yeah. And Bhool Bhulaiya 2 is one of the only films of this Of this this entire year, year. apart from Gangubai probably, which did really really well. They basically I mean, set it broke off right. records. हाँ. एंड लाइक इतनी अच्छी करी कि कार्तिक आर्यन के प्रोड्यूसर ने उसको- उसे गाड़ी गिफ्ट कर दी, और वो भी कोई छोटी मोटी गाड़ी नहीं थी, स्पोर्ट्स कार कोई करी है It was a 4-5 crore गाड़ी. या एंड इतना खुश वो हो गया कि इनके रिटर्न्स आए हैं. सो आप बताएंगे आपको भूल भुलैया 2 कैसी लगी, हमें बताइए. देखो, मुझे भूल भुलैया 2 बुरी नहीं लगी, ठीक है, it was good, but I don't understand the craze behind Right. the movie, ठीक है. I enjoyed it, मैंने देखी घर पे बैठ के. हाँ. लेकिन और मैं शायद अगर यहाँ पे रिलीज होती मैं शायद थिएटर में चली भी जाती. Of course, yeah. लेकिन वो जो क्रेज था ना कि ओ पीपल आर गेटिंग मैड अबाउट इट, Right. वाचिंग इट 2-2 दफा देख रहे हैं, 3-3 दफा देख रहे हैं. सही. Why? So the story isn't like something जो आप 3-4 बार देखें, but the theatrical experience is. So I was not in Karachi when it released, and I watched it in the theaters, and it was And Hannah made me jealous. It was awesome, guys. Like literally, the entire theater would scream together, would laugh together, and when क्या नाम है उनका? Rajpal Yadav came on screen, everyone clapped, and I was just like, oh my god, this is too good. Maybe because I watched it at home. Yeah. शायद इसलिए भी That's I the did thing. not feel That's the it. feeling I'm getting, because I watched it in theater and I enjoyed it, and then I watched it on Netflix बाद में, and I was just like, नहीं इतनी तो सही लग रही है. Yeah, so maybe it's the theater experience, क्योंकि I think COVID के बाद this was the first film which First biggest sort of film, I film, suppose. हाँ. I mean, COVID के बीच में इन लोगों ने 2-3 फिल्में रिलीज करी थी. I don't know if you लेकिन वो नहीं remember. चली थी. संदीप और पिंकी फरार करी थी. वो अर्जुन कपूर अर्जुन और परिणीति चोपड़ा की. और रनवे भी तो आई थी. रनवे भी आई थी. रनवे did like I think okay, yeah. Okay. They like didn't hype it up enough, I feel. True. Also because Ajay Devgan is not the type of person who will give 50 interviews in a day. True that. So, I think अभी तक तापसी की भी कोई नहीं आई है. तापसी की आई है, but there was शाबाश मिट्टू थी और एक और भी थी उसमें. But she's doing these sporty sort of हाँ. films, and all the sporty films start to look the same at one Yeah. point, right? And like even if Taapsee is a really good actress, I'm not gonna see her do the same roles again and again, right? True. Even I would want her to step out of her comfort Right. zone now. I watched Shabash Mintu and my dad was watching it on Netflix, and I kind of got bored in the middle. I was like, okay, cool, but like. I mean, yeah, sports films ने एक ही trajectory पकड़ ली है, तो Yeah. वो उसी पे चलते हैं कि you know success then downhill then success वैसे again. अनुष्का शर्मा की भी आने वाली है. Yeah, वो उसकी cricket Cricket से पे, related नहीं हाँ. आने वाली. हाँ. What are your views on Jersey if you watched it? I haven't watched it yet. I know you've told me to Yeah, watch it, but I haven't. I loved that movie. Although, I mean, ऐसा कुछ out of the box नहीं था, but Right. it was a very special movie. Okay. And I think that movie deserved to do well. But the problem with Jersey, it got a theater release, It right? got a theatrical So- release, and it was one of the first few movies जो थिएटर में रिलीज हुई थी आफ्टर कोविड. लेकिन उसका एक मसला ये था कि वो रिलीज डिले हो गई थी. फिर उनकी मार्केटिंग बेकार हो गई थी, उन लोगों ने अपना मटेरियल सब यूज कर material लिया use था. कर लिया था. आई रिमेम्बर. सो द थिंग विद फिल्म्स लाइक जर्सी इज दैट आप जर्सी जो है देख भी लो, बट ओके, सो फर्स्टली उसके रिव्यूज में सारे रिव्यूअर्स ने बोला था कि उसकी जो ओरिजिनल वर्जन थी व्हिच वाज इन तेलुगु या तमिल, if I'm not wrong, that was way better. So I was just like, oh, मैं ये क्यों फिर देखूं, मैं ओरिजिनल वाली देखूं. And second, I knew it was going to come on OTT platform, so why should I go to the damn theater? Of course, हमारे यहाँ पे लगती कहाँ है कुछ भी चीज, but थिएटर में ही मैं क्यों देखूं ये ऐसी मिड लेवल बजट की फिल्म जब आने वाली है नेटफ्लिक्स पे.
मैं literally like Google कर लेती हूँ कि कौन सी streaming उस पे आने वाली है फिल्में when they're even releasing. True, but then वो आने में 1 महीना लग जाता है, फिर वो थोड़ी hype खत्म हो जाती है. But हाँ, yeah, I खत्म हो mean, जाती है. अगर जर्सी यहाँ रिलीज हुई होती तो I would have definitely gone to Really? watch it because तुम लेके जाते I थे like मुझे. Shahid Kapoor. Shahid ठीक है? Kapoor is great. Yeah, I feel like he's- he got his recognition very later on in his Very- career. तो वो मुझे था कि जर्सी deserve to do well और it's just a very heart touching movie. Although Right. sport movie है तो I mean people would assume कि अच्छा वही हुआ होगा success downhill Right, success. right. लेकिन still there is potential. in that From what film. I heard, it has like a core like relationship in the middle, like the Yeah, son and yeah. वो, तो उसकी वजह से it probably works a little better. And also Shahid Kapoor worked with his father Oh, in अच्छा, that he film. did. Yeah. His father was his coach in the movie. अच्छा. So even interviews में he was asked, how was it working with your father? And he was like, this is one of my most special films अरे. because I spent so much time with my father considering he came from a dysfunctional family. Right, And, right. his parents But he's done separated. films with his father before. He has, but this was, I think, after a very long time. Oh, okay. Or after he was, और इसकी फिल्म भी कितने बहुत टाइम बाद आई है शायद. हाँ, probably. I mean, हाँ, सबकी इतने टाइम के बाद आ रही है. ये भी है वैसे. So the interesting thing was कि रणबीर कपूर की फिल्म आई शमशेरा, and it was like people were just like, this is his comeback, this is gonna be great, this is gonna be pre-Brahmastra success, and it just fell flat on its face. Like no one went to watch that film. I don't know why did they invest so much money in such a movie. Did you watch it? No. And you don't want to watch it? I don't want to watch it. The reviews reviews are not अच्छा कुछ reviews अच्छे थे भी. Right. But then they were like it's not worth it. It's not worth it to, if you're going to a theater, then I read the review which said के जो इसका जो गाना बहुत जी हुजूर जो बहुत मशहूर हुआ, वो रिव्यू ने उस रिव्यू में ये लिखा हुआ था कि watching जी हुजूर on a big screen it was one of the best experiences because वो proper Bollywood वाली feeling आ रही थी. But उसके अलावा if you're watching the film at home then don't, because you're wasting 3 hours 2 hours जितने भी हैं, because it's not worth it. But they made it for the theater. I don't understand why it didn't work if it was made for the theater. It had the themes of love, it had the themes of अपने बाप का बदला दूंगा sort of vibe, but like it still wasn't it. Was it because the story was something जो देखी हुई थी? I mean, I'm sure Ranbir Kapoor did no wrong. He is a very versatile actor. He has a अच्छा कल मैंने फिल्म कंपेनियन पे एक मैंने आई थिंक मैंने लिंक सेंड किया, उसमें उसकी टॉप 10 परफॉर्मेंसेस वर रेटेड. आई मीन ही हैज डन लाइक 18 फिल्म्स एंड ब्रह्मास्त्र इज हिज 19th film. सही. उसमें से उसकी जो टॉप 10 परफॉर्मेंसेस थी उसमें फर्स्ट पे रॉकस्टार, सेकंड पे बर्फी, फिर देयर वाज रॉकेट सिंह एंड जग्गा जासूस, राजनीति 10th पे थी, वेक अप सिट थी, ये जवानी है दीवानी. आई मीन ऑल ऑफ दीज फिल्म्स. और देखा जाए तो तमाशा देखा जाए तो इन सब मूवीज में he is playing a very different role. No role is similar. Rockstar or Burfi poles apart. Yeah, for sure. That's something Ranveer Singh says a lot, that there was this Hollywood actor, I don't know who, but he said कि I want all of my characters to come into one room and have a conversation, and they're like completely different from each other. Yeah. So that's something that like a lot of actors are saying these days, that they wanna change it up and they won't step out of the because of course audience wants new stuff up. Right. Of course everybody is वो era जो था एक सही golden era, वो वाला ऐसा के वाला era, it was a very good era. लेकिन I think अब people would rather watch Tamasha than watch a massive love story, but budget film with a love story. So वो भी तो बन रही हैं मगर, but like okay, so you're talking about content and experimentation and what new things people want, but a lot of these new
things are only coming on OTT and they're not coming in Yeah, theaters. And that since is- they're not coming on theaters, people don't want to go. And if people don't Exactly. want to go, box office collection नहीं है, तो they're like, हम new में क्यों डालें पैसे? And यही it's just an problem है. amazing cycle Yeah, here this is the problem जो I think people are facing. that Bollywood is facing. I wonder Hollywood में क्या हो रहा है उसे? Something to ponder upon, I think. Right? लेकिन एंड उसके अलावा अभी तुमने मेंशन किया कुछ, जरा बताओ क्या मेंशन कर रही थी? हाँ, हॉली वो अपना रोमांस एंड वो सब कुछ. सो अभी वो करण जौहर फिल्म बना रहा है आलिया भट्ट और रणवीर सिंह के साथ, कॉल्ड रॉकी और रानी की प्रेम कहानी. राइट. फरार नहीं है रॉकी है? नहीं. अच्छा ठीक है. कुछ और ही चल रहा है मेरे दिमाग में. बहुत absurd नाम है लेकिन I mean, But I mean, Karan Johar is Karan directing Johar, after yeah. such a long time. I would love to see it. Yeah, And with same. one of the two of the best Two of the actors best in Bollywood, like yeah, give it to me. And it's supposed to be rom-com, बिल्कुल वो किस्म की. और रणवीर सिंह तो है ही वो. So they are still doing those things, but I wonder if it's like different, slightly different or something. अब ये तो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा कि क्या हाँ. है, बट आई थिंक हो रहा है, लेकिन अब दैट इज ट्रीटेड एज समथिंग लग्जरी. What do you mean? एज इन यू नो हाउ कुछ चीजें होती हैं जो वी लाइक अच्छा ये हम करेंगे लेकिन पहले लेट्स गेट डन विद द मेन कंटेंट एंड देन वो एक लग्जरियस चीज होती है जो आप यू ड्रीम ऑफ इट अच्छा. To make- like your then- side project, not your main project. नॉट योर मेन प्रोजेक्ट. वो हो रहा है बट देन और वो भले साइड प्रोजेक्ट है सही, लेकिन सही. उसमें ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है सही. बिकॉज दे कांट जस्ट रिलीज इट. आई मीन इट्स नॉट अर्ली 2000 की आपने एक 3 घंटे की फिल्म कभी खुशी कभी गम बना दिया और सुपर हिट बन गई. अब सही. वो नहीं हो सकता बिकॉज ऑडियंस चेंज हो गई है. चेंज हो गई. Yeah, completely. And interesting point. So are you saying the main projects are films like Brahmastra and Pathan? मे बी. लेकिन फिर ये मेन प्रोजेक्ट्स आई डोंट नो इफ वी शुड कॉल देम मेन प्रोजेक्ट्स बिकॉज ये लोग इसको बनाने में 4 साल 5 साल लगा रहे हैं Mm-hmm. which is I don't think very economical. Economical, yeah, makes sense. I mean a year or chalo 2 years सही. is good, Right. but because you have 365 days सही, और ऐसी सही, बात सही. नहीं कि आप पूरा अगर आप दिन में 12 घंटे की भी शिफ्ट कर रहे हो आप हाँ, कर हाँ. सकते हो. ठीक है, आई बिलीव इन यू. लेकिन एक साल में एक- निपटाओ, जल्दी हाँ. करो, रिलीज करो. SRK की लास्ट फिल्म जीरो थी हाँ, in हाँ. 2017. Yeah. उसके बाद he is releasing a film after what 5 years 6 years. But to be fair, SRK took a really long break as well because उसकी फिल्में चल ही नहीं रही थी चल ना, नहीं रही recent थी. फिल्में नहीं चल रही थी. True. After I think वो माहिरा खान के साथ क्या करी थी, रईस. रईस. रईस was like moderately good. And I mean, story wise it was good, and I think it did well in the box office as well. Yeah. But उसके बाद से he's not been doing well. Harry Met Sejal, ये और ये क्या आ रहा था, जीरो. हाँ, जीरो सच Zero bullshit था. तो लाइक वो बंदा जो है ना उसी चीज पे आ जाता है ना कि he did something conventional like a love story. Harry Met Sejal did not work. Okay, he's just like okay, let's try something new. Zero में वो dwarf है. नहीं थी ना हैरी मेट सेजल तो. नहीं, वो सिर्फ उसने नाम दिया था, उससे वो अडैप्टेशन नहीं थी, है ना? इम्तियाज अली की है. आई थिंक उसको एक हॉलीवुड मूवी की अडैप्टेशन है. नहीं, हैरी मेट सैली से नाम उन लोगों ने लिया बिकॉज रणबीर कपूर सजेस्टेड द नेम कि ऐसे कर लो. सही. As far as I know. आई मीन जीरो बेहतर बन सकती थी अगर उसमें उन्होंने अनुष्का को नहीं लिया. अनुष्का की एक्टिंग was very not inconsistent. इनकंसिस्टेंट एंड I think they tried their best, but I think the second half was written so badly that even अगर कोई और भी होती तो कुछ नहीं कर पाते. It was just ridiculous at the end, right? It was I just like think- कुछ भी हो रहा है. Zero was the last Bollywood film that I watched in theater. I watched it in the theater. Right. I also watched it in the theater. Yeah. मेरे लिए उस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट था जो उनकी बॉलीवुड पार्टी हुई थी जिसमें सारे स्टार एक साथ. उफ, मैंने बोला इसमें तो करोड़ों के लोग हैं. इस पार्टी की वर्थ
is of billions. Basically, SRK called up his homies and was just like, bro, we need to shoot this scene. Yes, Can and I need you all. come? Please, aa jaye Can aap. you guys just wear your best sarees and come? They were Yeah, like, it yeah, was bro, we're a down. क्या था वो Om Shanti Om 2.0 हाँ. वो था. But Om Shanti Om was something that can never be recreated Never, again. never. Because, okay, so you listen to Farah Khan talk about how she made it. And she's just like, I had these like days. I've watched it on. हाँ ना, and she was just like, हम directly phone करते थे उस time पे manager नहीं होते थे. चोचले नहीं होते And थे. I was just like कि directly phone करके बुला रही है तो सही है. तो अब तो इनका कुछ होगा नहीं. Manager will be like dates match नहीं हो रहा I don't think अब वो हो सकता है. हाँ नहीं होगा, probably नहीं Unless होगा. आपके पास बहुत पैसा और टाइम है. करण जौहर सिर्फ करण जौहर करा सकता है और कोई नहीं करा. Is Karan Johar the only producer for Brahmastra? No, you need a couple of producers for this, man. Yeah, because I'm it's a pretty 300 million. 300 crore film. 300 crore film. अब वो 300 करोड़ बनाएगी तो उसके पैसे वापस मिलेंगे. So ब्रह्मास्त्र को इतना टाइम लगा बनने में 12 साल. 12 साल. Precisely. अपने लाल सिंह चड्ढा को लगा 14 साल. 14 साल लगे उसको बनाने में. 8 साल तो राइट्स लेने में लगे. एग्जैक्टली 8-9 साल तो राइट्स लेने में लगे. तो चलो फिर उन्होंने शूट तो इसको 2 साल में कर ली थी. और वैसे भी आमिर खान takes a while to shoot. So like makes sense for लाल सिंह चड्ढा. बीच में कोविड भी आ गया, चलो ठीक है, लाल सिंह चड्ढा को हटा दे. ब्रह्मास्त्र का भी it's very heavy VFX, very dependent on it, and VFX की quality इंडिया में अभी तक इतनी आई नहीं है, apart from maybe the South industry which had done Bahubali and right now have done KGF, RRR with amazing VFX in them. So I think main तो even they said कि VFX ही था, right? मसला. Yeah, इसीलिए तो उनको इतना टाइम लग गया. उनकी initial release was 2020. फिर I think 2019 थी. फिर 2020 हुई. फिर कोविड की वजह से they shifted to 2021 and final. और 2022 में भी मार्च था. फिर मार्च से जाके अभी सितंबर यहाँ पे आया. तो I mean कितनी इन्होंने डिले की है मूवी. और अभी भी तुमने अभी बोलो, तुमने अयान मुखर्जी अभी भी बोल रहे हैं कि फाइनल टचेस लगा रहा है. उसने क्या कहते हैं वीडियो डाली where the cast was watching the film for the first time together, पूरी फिल्म. and उसने बोला कि इस कैप्शन में लिखा होता कि we made final touches to the film this morning, which is so funny. I mean guys please बस करो. बहुत हो गया. अच्छा वैसे फॉर आवर नाज़रीन हम भी जो है ना ब्रह्मास्त्र की स्क्रीनिंग जरूर करेंगे. रनर रेडियो कराएगा, हम कराएंगे. we'll make sure के होगा and we get to experience it at least in some capacity. Some capacity of course. So inshallah, fingers crossed. यहाँ पे fingers crossed we're gonna make it happen. Yeah. But उससे पहले लाल सिंह चड्ढा दोनों कराएंगे. फिगर नहीं कर रहे हैं. I feel like every month we should do one screening every month. Yeah. Or even like twice a month. Twice a month as well. कल्ट भी चला सकते हैं ना. कल्ट तो करेंगे for sure. चलो okay, coming back to the end of Bollywood. Why is Bollywood ending? I need to hear your thoughts. Box office से पैसे नहीं आ रहे. सब लोग OTT में पैसा लगा रहे हैं. OTT से जो है जो भी सब्सक्रिप्शन का या जो भी डील्स इनकी होती हैं, जैसे कि धर्मा की डील है नेटफ्लिक्स के साथ कि धर्मा की फिल्में नेटफ्लिक्स पे जाएंगी. यश राज फिल्म्स की है Amazon के साथ. It works. It's economically it makes more sense for films to go on OTT because it has a farther more reach. Accessibility, सबके पास इंटरनेट है अब, not only within your country, not only in India but outside of India. हमारे अलावा भी non-Hindi, Urdu speaking people, more audiences that are abroad. That's it. Honestly, it's just the theatrically इन्हें मसला हो रहा है. And this is something that I think Hollywood is also facing कि सिर्फ Marvel and ये वाली फिल्में आ रही है ना, वो छोटी वाली नहीं आ रही. मैरिज स्टोरी भी आई थिंक हमें पता ही नहीं चलता, आती हैं निकल जाती हैं. हाँ वो आती भी हैं तो वो रेकमेंड होती हैं या फिर इंस्टाग्राम पे अगर कुछ होता है तो फिर आ जाता है. बट आई डोंट इवन नो कि यहाँ पे वो छोटी वाली फिल्में लगती भी हैं या नहीं लगती. नहीं लगती. हमारे यहाँ पे तो बेचारे वो थिएटर्स वाले ही मर रहे हैं ऑनेस्टली. और वहाँ पे भी ओके, हमारे यहाँ पे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि इंडियन फिल्में रिलीज नहीं हो रही. वहाँ पे इसलिए मर रहे हैं क्योंकि इंडियन फिल्में रिलीज नहीं हो रही.
हाँ चल नहीं रही चल नहीं बेसिकली, रही चल नहीं रही. basically. लेकिन फिर भी दे हैव अ लॉट ऑफ बिजनेस विद थिएटर्स. They do. उनके पास अगर मूवी नहीं भी चल रही ना तो भी रोज लोग आते ही हैं देखने. Exactly. हाँ. सोचो उनके मॉर्निंग 9 AM के शोज हाउसफुल होते हैं. Yeah. सुबह 9 बजे जब लोग जा रहे हैं ऑन अ मंडे मॉर्निंग. Yeah. What else do you want? So you know one thing that is also affecting theaters is that mid-budget and low-budget फिल्में जो ना year round आती रहती हैं. So when year round आती थी तो they had more consistent business. I remember my mom used to go to watch like random films like you know वो इतनी सारी आती बहुत रहती थी कुछ all ना the कुछ time. आता रहता तो था. मेरी मम्मी like अपने दोस्त के साथ प्लान बना के चली जाती थी and I was just like यार, and I just keep remembering that now but now it's just like you know ईद की एक फिल्म होगी, बकरा ईद की एक फिल्म होगी, not only over here but even there दिवाली की एक फिल्म होगी, you know. And abhi is September is like a weird time to pick for Brahmastra. I don't know why they did that, but like you know summer ke beginning mein, summer ke beech mein, summer films, those are supposed to be the bigger ones. So those sort of things are interesting to notice. That's also probably affecting the theater business a lot. Agreed. Yeah, right. Because they are eventually thinking कि भाई किस सीजन में हमारी फिल्म ज्यादा चलेगी, किस में नहीं चलेगी. तो अब जैसे सलमान खान है वो तो अपनी ईद पे ही निकालता है. ईद भाई है भाई, उनके वो नई ट्रेलर देखी भाई फिर आ रही है. भाई निकाल रहे हैं भाई बिल्कुल. कौन सी? बल्कि ट्रेलर नहीं है, लाइक अ लुक. कौन सी आ रही है? टाइगर? No. That's what the guy was saying कि टाइगर के साथ he should come have his comeback, but he was doing it's some other like really Radhe sort of film. Do you guys know Radhe? No one knows Radhe. No one should know Radhe. No. Radhe, thank God my eyes haven't watched Radhe उसकी screening करा है. मैंने राधे की उसकी screening. इतनी रोस्ट वीडियोस देखी हैं. यार राधे की स्क्रीनिंग कराता सब हंसेंगे एक साथ. लाइव रोस्ट होगा फिर तो. लेकिन अच्छा, I am kind of waiting for Tiger 3. Yeah. Because 1 and 2 were decent. हाँ. I mean कुछ था उसमें. वैसे एक चीज में सॉरी अब टू इंटरप्ट यू, हम भाई की फिल्मों के बारे में बात करें. भाई की फिल्में तो समझो थिएटर में ही चलेंगी. वो तो आप OTT पे क्या चीख मारोगे भाई के लिए. वो स्क्रीन पे आएंगे तो बोलेंगे ना अरे भाई आ गए. राधे नेटफ्लिक्स पे आई थी. Not on Netflix, it was on some Z5 or something, I don't remember. वो थिएटर पे नहीं थी. नहीं वो तब कोविड था ना बिल्कुल. Really in the midst of COVID जो ईद थी उसमें राधे रिलीज हुई. I mean sometimes I really wonder how do writers, producers invest in such a film. It's because it's so star led ना. स्टार बट स्टिल आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है. वो तो प्रभु देवा ने वो करे थे डायरेक्ट. But you know now it's also coming to the point के starlet films aren't working. So we've seen that with Shah Rukh Khan, Zero, Harry Met Sejal, अपना भाई. People now only care about content. Yeah. But I feel like but stars still have power, man. Like पठान के बारे में I don't even know the story and I'm like अरे Shah Rukh Khan I want to go see. Yeah. I mean हाँ वो charm तो है, but you know how Shah Rukh said that I am, I think, one of the last few stars for sure, because अब वो stardom नहीं है. हाँ definitely नहीं है. I mean I think yeah, even if Amir Khan, Salman Khan, चलो सलमान खान तो भाई है भाई को नहीं कर सकता. भाई को आप छू के भी नहीं जा सकते. Specifically talking about SRK and Amir Khan, उनकी फिल्म्स नहीं भी चल रही ना तो भी वो स्टार ही है. वो रहेगा. वो तो है. ये तीनों है. आपको सलमान खान को एक्सक्लूड करना हो फिर भी वो तो मैं एक्सक्लूड कर रही हूँ. लेकिन वो भी है. I think his 20s era, जो 90s में उसने जो फिल्म निकाली है ना, they were good. Early 2000s. हाँ सलमान खान after 2010 he went into high mode ना. तब उसका डाउनफॉल आ गया था. लेकिन वो उनका डाउनफॉल नहीं था. वो लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं. आपकी आंखों में डाउनफॉल आया है. कौन है वो लोग? दूसरों के. उनकी बहुत बड़ी वो है फैन बेस, बहुत बड़ी है उनकी. But I don't know if you remember Salman Khan tried to do Tubelight and Tubelight was a very different film. I liked it. I haven't seen it. मैंने थोड़े से clips देखे but उसके अंदर एक रिव्यू या कुछ मैंने उसका देखा था एनालिसिस के even though भाई has his star power,
his audience is used to seeing him being A dabang. being, And smashing people. yeah. And then they saw him in Tube Light, where he was this like a cute guy who was, I don't know, innocent and all. Yeah, So and they were just like, what? No, this isn't Bhai. What's happening? And the film didn't do that well, right? it, you know, although I think it was a good film. Yeah. I mean, OTT पे release होती तो I think वो चलती. OTT उस टाइम पे I don't think नहीं इतना था हुआ था. नहीं था ना, उस तभी नहीं चली. Yeah. So वो I think अब producers भी जो ना, they're kind of moving away from star power. I feel like content driven ही हाँ. जो तुम बोल रही हो वही है. Content driven और plus who can pull off a role better. Yeah. I mean That's हर true. किसी को हर कुछ नहीं ऑफर करते वो. अनन्या पांडे को तो सारे ऑफर्स आ रही हैं. उसके लिए एक अलग एपिसोड है. I'm so like ready to talk about Ananya Pandey one day. Like just I have analyzed her every move and I'm ready to share it with the world. I think Liger. Okay, so they even made Liger. Yeah. And it was like Dharma backed with a major South star. ठीक है, Vijay Devarkonda. With the actual star, yeah. And the funny thing is that this was like a collaborative project. It was like South के भी लोग उस पे काम कर रहे थे. Not only Vijay Devarkonda, but even other people behind the scenes. And it was such like, do you really expect your audience to watch that? See, honestly, अगर उसमें अनन्या पांडे नहीं होती ना, maybe it would have been a bit. No man, the story was bullshit यार. वो लड़की अगर अनन्या पांडे नहीं होती, चलो दीपिका पादुकोण को कर दो, उसके अंदर लाइन तो फिर भी है ना कि मेरी एक खिलौनी है ना, लाइन एक खिलौना है. मैंने नहीं देखी. मेरी खूबसूरत खिलौना. वो सारे रिव्यू वाले बोलते हैं कि अनन्या पांडे इंट्रोडक्शन स्टार्ट्स होती है मेरी खिलौना है. वो ये भी तो बोलती है मैं हॉलीवुड में जा रही हूँ. हाँ, I'm an Instagram star. I'm gonna go to Hollywood to become an actor. Ouch. Oh, that is beautiful. No? That is a peak acting. This takes me to Coffee with Karan. What are your views on coffee? I love Coffee with Karan. I paid for Coffee it. with Karan is a guilty pleasure. I'm not even guilty about it. It is my pleasure. Yeah, I mean it is a pleasure to watch because देखो Karan Johar, hate him or love him, he knows his shit. He's self-aware. He knows very his self-aware. उसको पता है वो कहाँ गलत है, उसको पता है वो कहाँ सही है. उसने इंटरव्यूज में he does accept जब जो उसके प्रोजेक्ट्स गलत थे, मतलब where he was unlucky, उसने एक्सेप्ट किया कि अच्छा ये मेरा नहीं चला क्योंकि इसके डाउनफॉल ये थे. जहाँ उसने अच्छा काम किया उसको फिर उसका भी क्रेडिट नहीं देते. एंड that's true. And उसकी पूरी जो बहुत ही तवील सी इंटरव्यू थी with अनुपमा चोपड़ा, he's so honest about it. He's just like, मुझे बोलते हैं लोग कि My Name is Khan is like the best film like जो मैंने बनाई है, but like मेरे लिए it's not the best film क्योंकि I only did it क्योंकि मुझे critics का वो praise चाहिए था at that time. And like now he's just like, now I'm back to making films that I want. Even though My Name is Khan is beautiful, amazing, awesome के उसने बीच में ये कर लिया. But glad to have that film. Yes, for sure, because it also represents like a part of history, of course, and the lived experience जो बाहर मुसलमानों के साथ हुआ and everything. So it's an interesting. But like उसको देते ही नहीं है वो क्रेडिट. I mean वो just because he's launching Star Kids तो वो nepotism का टैग लग गया है उसको हर वक्त. और I can't get it. Nepo Kids को लॉन्च करता है, उसके दोस्त के बच्चे हैं यार, वो उसने ही नहीं करेगा तो हम किसको. I mean क्यों नहीं करेगा यार. हाँ ना, तुम भी अगर कल प्रोडक्शन कंपनी करोगी और मैं अपना बच्चा लेके आ जाऊँ कि यार मारिया इसकी ऑडिशन तो ले ले, कंसीडर तो करूंगी ना, मैं क्यों नहीं करूंगी यार. तो मुझे नहीं बोलोगी क्या रे तो आपसे क्या ऑडिशन है, आप भेज दो. Because see, Karan Johar is not some random producer. Yeah. No, he runs a whole ass. Yeah, and he's a legacy producer. His dad was such a big name. I mean, Dharma is a big thing. Yeah. मतलब अगर Dharma can produce Brahmastra जो कि 300 करोड़ जैसी फिल्म है, तो वो क्या कर सकती है फिर. I mean, it depends ना कि Brahmastra, if it does well, then we can see what they can actually do. Because then the next film is going to be 500 crore के budget पे, and we'll be like, okay, let's see it. What is this 500 crore? But
I mean, एक sad part ब्रह्मास्त्र का ये है कि it's a trilogy, trilogy, जो भी है। 3 फिल्में हाँ, आएंगी, 3 फिल्में तीन parts आएंगी। हैं, part 1, part 2, part 3 है। part 1 बनाने में if they took 12 years, तो part 2 और नहीं बट अब सीख गए ना, वीएफएक्स सीख गए होंगे। हाँ, I mean, हमारे मैंने बुढ़ापे कहीं तक तो नहीं चला मैंने सकते कहीं ये पढ़ा लोग। था कि they will complete the franchise in the next 8 years. 8 years is still good, हाँ। I mean, if they take 4 years for one film, it is Yeah. better. Then this one, but it only comes down to if Brahmastra works, and Brahmastra Yeah. working is kind of like the pinnacle The of our pinnacle. entire the end of Bollywood question, True. because there were so many films that were supposed to work this year. But they Liger did was not. supposed to work, Shamshera was supposed to work, Jersey बीच में और was भी है, supposed to Jersey work. was supposed to work. All the theatrical releases that came were supposed to work, and they were like literally producers were waiting for 2022, right, कि सब कुछ खत्म हो, कोविड खत्म हो, लोग आएंगे थिएटर्स। Yeah. आई थिंक बुलबुलैया 2 was just released at the right time, you know, कि वो लोगों को आना था थिएटर्स में, उन्हें हंसना था, वो लोग आ गए, उन्होंने एंजॉय किया, वो लोग चले गए। That was it. Oh, Jug Jug Jio. Oh, Jug Jug Jio, did it do well? Yeah, I think it crossed 100 crores. 100 is like budget क्या था फिर? इतनी मास बजट नहीं थी फिल्म, राइट, बट उसके स्टार स्टडड था वो तो। हाँ, वो तो भाई फुल ऑन प्रॉपर, और उसमें आई थिंक प्राजक्ता तो लॉटरी लग गई उसकी। यार मुझे तो बहुत ही क्यूट लगी उस फिल्म में, तुमने देखी? नहीं वो मैं वही बोल रही हूँ ना कि फर्स्ट फिल्म धर्मा के सन्स, व्हिच इज awesome, amazing, और वो भी ऐसी स्टार कास्ट, इतनी amazing, right? And I think she did a pretty good job, honestly. Not bad. Have you seen the film? Yeah, I also like it. Amazon पे देखी मैंने। I felt like the reviews were a bit harsh towards it, to be honest. I felt like they dealt with the subject matter with seriousness and with comedy. So I mean, the film is that. The film was supposed to be a light comedy and just family drama. Exactly. It was supposed to be like. And it was that, right? So like उसके अंदर आप इतनी सारी meaning अगर ढूंढोगे तो अब ये वही हम वही आ जाता है ना कि आप किस फिल्म को कंटेंट की नजर से देखें, किस फिल्म को जस्ट एंटरटेनमेंट की नजर से देखें। I guess the lines of mass entertainer and content is getting blurred too much. I mean, content, it is. Content they're trying to inject into mass entertainment, but they're not, like, they haven't been able to balance how much of entertainment there should be. यही है confusion. So आपका ending thoughts दे दें? Yes, sure. Ending thoughts. Bollywood survival? Yes, no, maybe. I don't think it can end, but ये हो सकता है कि एक नया era शुरू हो सकता है। Of OTT. Yeah, of the kind of content that people want, they want to consume. Right. Because I think अब बहुत सारे नए writers आ रहे हैं. सही And से. also, one of the best parts is people are now taking stand-up comedians as writers in their films. Really? Yeah, Sumiti Suresh is working on a script for a movie. Oh, nice. Tanmay Bhatt has worked for so many films. For films, yeah. और क्या कहते हैं? I think Rohan Joshi should work on a script. He will be. He's so witty. He's very witty. He has this power. वो बहुत intelligent है वो, और he can easily pull off jokes. Yeah. No, that is a good point, I think, yeah. But ये new generation of writers आ रहे हैं and everything. But उनमें से theatrical releases कितनी होंगी? वही आ जाता है ना। वही ना, थिएटर में कौन सी? चलो अभी के लिए या ठीक है। हम तो सिर्फ अभी कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं और राय दे सकते हैं। हम तो राय देंगे हम। मेरी राय ये है कि ब्रह्मास्त्र चलेगी एंड चलेगी, नहीं भागेगी। मुझे भी ये लगता है कि ब्रह्मास्त्र, आई थिंक लोग जो है ना इसका इंतजार कर रहे हैं। ये जब से रणबीर और आलिया ने शादी की है ना, तब से जैसे अब तो ये भाई वो केसरिया का टीजर डालना was the best move ever, smartest thing ever, smartest thing. वो उन्होंने उसी वक्त hit it off. Yeah, they were just like, now we've got this. Okay, so ब्रह्मास्त्र भागेगी और उसके बाद hopefully
I think Pathan January में release होगी and the Yeah. momentum will go forward. I really hope Shah Rukh Khan की ये film Yeah, चले. please, I really I'm same. just waiting to see Shah Rukh Khan. On a big screen. And I'm also waiting to just see his interviews because he's such a like charming, funny Yeah, guy, and he promotes the hell out of his films. So I'm ready for those interviews and Anupama Chopra ki पूरा discussion क्या 5 साल के बाद आ रहे हो, what do you think? I just hope he does those interviews. Yeah, I think he will. He always promotes his films a lot. And then फिर वो वाली फिल्म आ रही है वो जोया अख्तर के साथ जो है जीले जरा जीले yes. जरा। लेकिन अभी उसको आने में तो अभी टाइम Time लगेगा है, because अब yeah. तो वो तो next year start shoot, हाँ, होगी। start होगी तो तो एक साल के बाद Yeah. probably आएगी, but I have hopes for the industry same. and inshallah one day Pakistan में Bollywood will be back and I wouldn't have to do the show to vent out my feelings. पता नहीं कब आएगा यार वो दिन यार मैं आ ही नहीं रहा। लिटरली जब गवर्नमेंट चेंज हो गई थी ना, so my family is a very big PTI supporter, so I was just like if these guys bring back Bollywood I'll be fine. I won't mind Imran Khan getting dethroned as long as Bollywood is back. So that's me. What do you think? Yeah, I think अब इतनी परेशान क्यों लग रही है नहीं, मैं अचानक से? ऐसे ही मैं सोच रही हूँ ना, मैं ये सोच रही थी मैंने लास्ट फिल्म कौन सी देखी है, तो मुझे मैं यही सोचने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो लास्ट literally मैंने देखी थी। वेब सीरीज देखी थी। ओह yeah, which brings me अभी so I started watching Criminal Justice. Okay. ठीक है, it's पंकज त्रिपाठी अच्छा and वो season 1 आ चुका है, season 2 and now Netflix this पे? is season 3. No, Amazon पे, no, Hulu पे, no. Disney I Hotstar think- पे, Disney Z पे, Hotstar पे। Hotstar ठीक पे। है। तो वो मैंने सीजन 1 देखा था, सीजन 2 देखा था, सीजन 3 रिलीज हुआ इस साल, साइड बट से उनका सबसे बकवास मूव इज रिलीजिंग एक एपिसोड एवरी वीक, हाँ so was और इतना literal was people are loving the series series, because yeah. it's a very good franchise सही because of course पंकज त्रिपाठी, but वो सब everybody is criticizing कि भाई ये क्या OTT का मजाक मकसद है? होता है binge watching and हाँ। if you're releasing it ये आप hype ही खत्म कर रहे हो सही उसकी। से you look I feel like Coffee with Karan के साथ it works Yeah, because क्योंकि ये तो it's like a हाँ, talk show, talk it's like show a है। hype thing, but with shows I don't understand why they do this. Even Hulu पे जो वो Selena Gomez की series है Only Murders in the Building, it's pretty popular and मैंने अपनी बहन के साथ देख रही थी वहाँ पे, तो उनकी नई सीरीज आई and every week you have to wait for it and I couldn't even remember कि last episode में क्या हुआ जो connect हो रहा है, Exactly, वही तो क्योंकि it's like a full mystery thing, right? So I don't even remember the clues from the last episode. How can you expect me to catch up on what the new is this? episode? So- ये है एक मसला। चलो we digress but so Bollywood not ending Not ending. will not end. We are here to keep it To keep it alive. So yeah, I think that's it from us. कुछ आपको कुछ और कहना? नहीं, बस चले बस बहुत मजा आ गया। बस ठीक है जी, खुदा हाफिज। जिंदगी Sorry करो see you कर Okay, see you all next week because we will be back with our faculty with a new guest. Guess who it is in the comments below if you have gotten here till the end. अगर पहुंच गए तो ठीक, वरना लेकिन अगले हफ्ते बहुत ही exciting episode होने वाला है because we have a very special guest And we love that person. we love that person so much. I mean अभी बता नहीं सकते कितना, लेकिन बहुत ज्यादा इतना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। तो यस इसलिए अगर हम अगले एपिसोड में आप हमें देखें कि हम कंटिन्यूसली हंस रहे हैं या हम शर्मा रहे हैं हंस रहे हैं तो आप समझ जाइएगा कि क्यों हंस रहे हैं। वो बस बहुत ही बड़ी हंसती है, स्टार स्ट्रक तो देख लेती है तो रुकी जाती है 2 मिनट। ये क्या हो गया? अच्छा ठीक है, वो यस सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए